और एक बात बोलना है, लाइक आई एक्चुअली promised in my first video that I'll be telling you about the restrictions about the Kerala government to travel to tourism and everything. But I think I couldn't able to complete that in that video, so let me explain you in this. So how did we reach Kerala and what are the procedures we need to take care of that? So all these things I'll be explaining you in this short video. Probably I'll make this as a different shorter version of video explaining you what all the things required and how it goes. uh, Let me sit down and peacefully explain you all the things. So we started from Bangalore, and we have our own car, that means my friend's car, SUV, which you might have already seen in some of the videos. So initially what we came to know that is, yes, the Kerala restrictions are not that strict right now. I mean, see, as per the government, whoever is coming for tourism, especially for the tourism, if they are traveling within Kerala for the next 7 days, that is within the 7 days, अगर आप एक हफ्ते से पहले if you leave Kerala, then you don't have to go through any kind of uh, quarantine restrictions or something like that. अगर आप 7 days से ज़्यादा wanted to stay in Kerala, then it is a mandatory restriction that you have to undergo that COVID test. COVID negative का certificate होना चाहिए. Then only you are allowed to stay beyond 7 days to 14 days in Kerala. So वो है एक restriction. Sorry. So दूसरा traveling के लिए, सो पहले सोचा था, आई मीन इफ यू नो अबाउट दिस ट्रैवल, लास्ट मंथ तक टिल नवंबर तक यू नीड टू हैव एन ई पास, ए मैंडेटरी ई पास. सो अभी भी आई मीन वहाँ पर जागृता बोल के एक साइट है, जागृता.org और समथिंग लाइक दैट, आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट. उसमें आपको अपना ट्रैवल रजिस्टर करना पड़ेगा, लाइक आपका व्हीकल नंबर, किन किन पैसेंजर्स डिटेल्स, एवरीथिंग यू हैव टू अपलोड इट देयर. तो सम पीपल हैव सेड दैट अभी ज़रूरत नहीं है ई पास के लिए, बट ऑन द सेफर साइड it's completely free. So on the safer side, it would be better if you take that e pass and travel. हमको तो no one actually stopped us in any kind of border. uh, as I said, we're traveling from Bangalore, that is in Karnataka. So we passed two states. That means in between we passed Tamil Nadu, no one stopped us, and we entered Kerala, no one stopped us. But we actually took that e-pass. So जागृता साइट में जाना है, आपका जो भी व्हीकल है, व्हीकल का नंबर देना है, उसका डिटेल्स देना है. सो हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग, हर पैसेंजर का इंफॉर्मेशन पूछेगा, लाइक नाम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ का कुछ नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, कुछ भी चलेगा वहाँ पर. सो पूरा डिटेल्स बना के जस्ट अपलोड करना है. आपको एक कॉपी मिलेगा, वो कॉपी सेव करना है, और तो प्रिंट आउट भी ले सकता है. सो जस्ट कीप दैट कॉपी एंड ट्रैवल अक्रॉस, दैट्स इट. दैट्स एज सिंपल एज दैट. ये मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ गुड इफ़ यू कैन टेक इट, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. So that's my recommendation, that you take this Jagrata pass wherever you are traveling from any state to Kerala, and try to leave Kerala within 7 days. If you are coming on a tourism, then quickly wrap it up within 7 days, so that you can, you know, uh, cross the border of Kerala on the seventh day. You plan the itinerary in such a way, so it's good for you, and complications भी ज़्यादा नहीं होगा. क्योंकि अभी देख लो, अभी रूमर्स है कि आई डोंट नो कितना सच है कि नहीं, बट
things are moving in a second wave, second covid wave direction. So पता नहीं अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी restrictions कर दिया, so दिल्ली गवर्नमेंट भी restrictions बढ़ा दिया. So we never know what's going to happen in future again with the second covid wave is started. So अगर प्लान करना है तो ट्रैवल सेफली प्लान कीजिए, एंड वही मेरे सजेशन. एंड कहीं पर जाओ, पहले आपका उस गवर्नमेंट का रूल्स पढ़ लो. हर गवर्नमेंट का अपना अपना वेबसाइट्स बना चुका है, कोविड के रिलेटेड वेबसाइट्स अपडेट्स मिल रहे हैं वहाँ पर. तो एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन काइंड ऑफ वेब प्लेटफॉर्म्स और एप्स. केरला के लिए जागृता है, some other states have some other apps, I don't remember the names exactly. तो पहले आप उस गवर्नमेंट का वेबसाइट खोल लो, पढ़ लीजिए what are the restrictions they have. so उसके हिसाब से आप देख लीजिए. अभी देखो, वी वर सपोज टू गो टू एक्चुअली महाराष्ट्र पुणे. हमारा इनिशियल प्लान था महाबलेश्वर लोनावाला खंडाला. लेकिन लास्ट मोमेंट में लाइक जस्ट एक हफ्ते पहले लाइक वी postponed, I mean cancelled the trip, keeping in mind of the Maharashtra government's restrictions probably. क्योंकि अभी हम सबको पता है like Maharashtra and Delhi, these are the states which has the highest COVID cases, and अभी वहाँ पर भी restrictions आ गया था. So we thought maybe we don't want to take that kind of a risk at this point of time. So हमने अपना ऑलमोस्ट सब बुकिंग्स वगैरह पूरा चेक कर लिया. ऑलमोस्ट वी आर सपोज टू मेक द पेमेंट्स फॉर द बुकिंग्स. तो लास्ट मोमेंट में वी हैड टू मेक सम कॉल्स टू सम पीपल whom we know in media. So हमको इन्फॉर्मेशन मिला है लाइक डोंट गो देयर, it's not safe now, probably more restrictions are coming into place from 1st December. तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा. So then we suddenly out of nowhere we planned of Kerala, because even we are not sure whether Kerala government is allowing tourism or not, how safe it is. So हमको कुछ रिसर्च करना पड़ा. Then we find out that yes, within 7 days you can actually travel inside Kerala. Not much of restrictions are there, and तो वही like once we came to know about that information, then we did little bit of digging, and here we are in Kerala enjoying my life. And this trip really helped me a lot in making my dream of fulfilling vlogging, because as you all know, this is my first ever vlog series I'm doing, and without any kind of professional equipment or something like that. I'm just traveling with my microphone, you can see, and my camera. And I'm not carrying any professional camera, it's a mobile camera in fact. So thank you very much guys, those who are watching these vlogs, and if you're feeling that you're getting some kind of information out of this, whatever I'm experiencing, I'm sharing you all my thoughts and information whatever possible way. So if you feel like you're getting a little bit more information and value, please do like this video, subscribe, and share to all your friends who are looking for such kind of information. So thank you guys, hope you see you in the next video. Take care, bye bye.